Hi students, good afternoon to all of you. Why I have written semiotics here? The reason is that it is a field, it is a part of the unit that is cultural studies. And you must have uh, gone through my video of cultural studies, which I have uploaded 1 week before on the YouTube. That was the basic. And I told you to listen to that cultural studies lecture, all of you. I hope you must have all have gone to that lecture. So semiotics is also a part of that culture and studies. Semiotics is an investigation. इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में आप समझते हैं जब हम किसी भी चीज की जांच पड़ताल करते हैं. सिमियोटिक्स क्या है? इट इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड. किस प्रकार से किसी शब्दों की मीनिंग को हम क्रिएट कर रहे हैं और वो जो मीनिंग आ रही है या जो उसकी मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, वो किस प्रकार से कम्युनिकेट की जा रही है. दैट कम्युनिकेशन ऑफ दैट मीनिंग इज इंपॉर्टेंट. So what can we say? That semiotics is an investigation into how meaning is created and how meaning is communicated to you. And its origin lie in the academic study of how signs and symbols create meaning. किस प्रकार से जो साइंस हैं और जो सिंबल्स हम लोगों को बचपन से सिखाए जाते हैं, वो किस प्रकार से अपने आप शब्दों को या उसके अर्थ की मीनिंग को कम्युनिकेट कर देते हैं. एक बच्चा भी जब उसको बचपन से सिखाया जाता है कि देखो बेटा इसका मतलब ये होता है, तो धीरे धीरे बच्चा भी समझ जाता है कि अगर इसमें लाल निशान लगा है तो दिस मीन्स डेंजर. पापा ने मना किया था कि अगर यहां पे लाल है तो ये डेंजर है. सो व्हाट इज दैट रेड लेबल नियर द इलेक्ट्रिक मीटर और समथिंग लाइक दैट? इट इज डेंजर साइन. So what is that danger sign? That is sign and symbol. So इसका जो origin है वो कहां पे है? In the academic study of how these signs, these symbols, and these signs and these symbols can be visual, can be linguistic. They create the meaning out of it. And it is a way of seeing the world. Semiotics क्या है? ये एक तरीका है कि कैसे आप संसार को देख रहे हैं. एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द लैंडस्केप एंड हाउ द कल्चर इन विच वी लिव हैव अ मैसिव इंपैक्ट ऑफ ऑन ऑल ऑफ अस अनकॉन्शियसली. हमें अनकॉन्शियसली पता ही नहीं होता कि कितना ज्यादा उन चीजों का हमारे ऊपर इंपैक्ट है. एंड दैट इज ऑल unconsciously, subconsciously, we are not conscious about anything. Then too, our brain responses accordingly. क्योंकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसी तरह से की गई है. जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी का, आंखों का, शरीर का, अपने हाथ पैर का, हमारे थॉट्स का जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं. हम किसी से टकरा जाते हैं, क्यों कहते हैं सॉरी? ओह व्हाट हैपेंड? सॉरी. Why our actions, why our thoughts, which we do, which we communicate automatically, are governed by a complex set of cultural messages and conventions. And all these set of cultural messages and conventions are dependent upon our ability to interpret them instinctively and instantly. किस प्रकार से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं? इंस्टिंक्टिवली और इंस्टेंटली, तुरंत. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स. फॉर इंस्टेंस, व्हेन वी सी डिफरेंट कलर्स ऑफ अ ट्रैफिक लाइट, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और ट्रैफिक रास्ते में चौराहे आते हैं तो हम ट्रैफिक लाइट हमको दिखती है. सो वी ऑटोमेटिकली टेंड टू नो एंड वी रिएक्ट टू देम. नोबडी कम्स टू अस कि अरे गाड़ी रोकिए, देखिए लाल हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया. Nobody is there. That is our instinct that we know what we have to do, and we know this without even thinking about it. हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ब्रेक कब मारना होता है हमें बताता है कोई? No. But this is a sign which has been established by the cultural conventions over a long period of time.
and which we have learned as children and requires a deal of unconscious cultural knowledge to understand its meaning. And viewing and interpreting को हम कह सकते हैं डिकोडिंग भी, किसी भी चीज को डिकोड करना. व्यूइंग देखना, किसी चीज को इंटरप्रेट करना या डिकोड करना. This particular sign or any sign enables us to navigate the landscape of our streets and society. हमें कोई भी चीज को नेविगेट करना है, अपनी सोसाइटी को, स्ट्रीट्स को, कहीं भी. All these signs of which we can view, which we can interpret, which we can decode, enables us to navigate. Everyone is a semiotician. Semiotics से बना है semiotician. Semiotician. Everyone is a semiotician because everyone is constantly, unconsciously interpreting the meaning of signs around them. हमारे चारों तरफ साइंस ही साइंस होते हैं. तो हम क्या करते हैं? हम हर इंसान अपने आप में एक सेमियोटिशियन है. क्यों? Because everyone is constantly or unconsciously interpreting the meaning of signs around them, from traffic lights to the color of flags. उस देश की, दुनिया की फ्लैग्स को देख के हम कैसे पहचान जाते हैं कि ये फ्लैग उसका है, ये फ्लैग उसका है? क्योंकि बचपन से हमने किताबों में, कॉमिक्स में, मैगजीन्स में हमें पढ़ाया गया है, हमें सिखाया गया है कि ये है, और हमारे मन के अंदर वो इंगित हो गया है. सो फ्रॉम ट्रैफिक लाइट्स टू द कलर ऑफ फ्लैग्स टू द शेप ऑफ कार्स. आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे दूर से रात में बता देते हैं कि वो कार कौन सी है. हम बड़े होकर के नहीं बता पाते क्योंकि हर जमाना अलग है. वो कार्स की पीछे की लाइट, आगे की हेडलाइट देख के बता देते हैं. Why? Because that is also a type of a sign which these little kids, they are able to see through so many things which they around them. The architecture of buildings, क्यों हम बता देते हैं कि ये रोमन आर्किटेक्चर है, ये रोमन आर्किटेक्चर है, ये मेडिवल आर्किटेक्चर है, ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, कैसे बता देते हैं? And even we are able to tell the design of the cereal packing. CEREAL, cereal packaging. And signs don't only need to be visual. उनको जरूरत नहीं है कि वो केवल विजुअली हो पाए. They can be oral or sonic signs too, such as the sound of an ambulance. एम्बुलेंस की साउंड हमें पता चलती है, हम गाड़ी किनारे कर देते हैं, हम गाड़ी को देखते तो नहीं है, हम उसका इंतजार नहीं करते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है तब हम अपनी गाड़ी को किनारे करें. फायर ब्रिगेड, हम इंतजार नहीं करते हैं. वी लिसन, एंड व्हाट इज दिस साइन? दिस इज द हियरिंग साउंड. द ऑरल और द सोनिक साउंड्स आर आल्सो लाइक द सेमियोटिक साइंस. When we hear these sounds before the vehicle is seen, and we take the step accordingly. In other words, we need to understand the context in which a sign is communicated. हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि इन विच अ साइन, किस साइन को किस तरह कम्युनिकेट करना है, इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड इट्स रियल मीनिंग, कि उसकी रियल मीनिंग निकल के बाहर आए. तो जब रियल मीनिंग आएगी तो क्या होगा? उस पे जो एक्ट होगा वो अप्रोप्रिएट होगा, एंड हेंस वी कुड एक्ट अप्रोप्रिएटली. व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द साइन इज यूजुअली as important for us to know as the sign itself in order to interpret its meaning. उसकी मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए what is going around the sign is usually as important for us to know as the sign itself, so that we can interpret the meaning of that sign. And semiotics क्या है ये? It is a key tool. It is a key tool to ensure the intended meanings. To ensure the intended meanings, for instance, a piece of communication of a new product. कोई भी न्यू प्रोडक्ट को कैसे हमें लॉन्च करना है, उसका क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, और
unambiguously understood by a person on the receiving end. Usually, there are good reasons if someone doesn't understand the real intention of a message, and semiotics then help unravel that confusion so that that clarity of meaning is ensured. तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया सेमियोटिक्स हमारे जीवन में कि मीनिंग को क्लियर कर देता है सेमियोटिक्स. And semiotics started out as an academic investigation of the meaning of words, जिसको कहते हैं linguistics. It moved into examining people's behavior. और वो बिहेवियर में क्या आता है? साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी. Then evolved to become an inquiry into culture and society. Following that, it moved on to assisting with analysis of cultural products. It even moved up to that. And what are these cultural products? Films, literature, art, critical theory, and finally, more recently, became a methodology of researching and analyzing consumer behavior and brand communications even. So such is the vital role of semiotics in cultural studies and in our, you can say, in our day-to-day life. And this English word semiotics designates the science of science. The science of science. Science are objects that convey something. A message, they presuppose someone who understands them. उसको कहते हैं एक interpreter. And the process in which science and interpreters are involved are called sign processes. Clear? So a set of interpreters together, a set of interpreters together with the signs and the messages interpreted by them, as well as the further circumstances relevant to the interpretation is called a sign system. उसको पूरे को कहते हैं sign system. Thus, we can say that semiotics studies signs with respect to their functioning in sign process within sign systems. बस ये ध्यान रखिए आप. वन लाइन का इसका आंसर हो गया कि semiotics क्या है. Thus, semiotics studies, मतलब स्टडीज किसकी? semiotics की. Semiotics studies science. क्या पढ़ता है वो? Science. SIGNS. With respect to their functioning in sign processes within sign systems.